Hello students, congratulations to a new English class of your class 8 English book. Today we are going to discuss about a very interesting story which tells us about the importance of the grandparents. We are fully neglected these old peoples, so that we could not get their experienced life story. As you know that experience teaches us so many things than a book. So the old ones have their experienced knowledge about all things. In our hard times, they helps a lot, but we did not care for them and treat them as they are unnecessary in our society. Actually, we considered them as a wastage of our home, wastage of our society, but actually they are golden ones. They share their knowledge when we need a lot, when we feel that something is going to be wrong with us. If we ask some questions to solve our problems, they lived here facing so many problems and reached in their ages. So they have the real power to overcome and tackle all types of problems which is very hard for us to solve. So today we are going to discuss about a new story. In this story, we know that how they are really important and save a village in a hard time. When the king also bowed their head before the situation, in that meantime the grandmother helped full village with contributing their knowledge and answered some difficult riddles to make their village free and to be fed by other kings. So it is a very interesting story. Listen it carefully and remember, and also learn from this topic that we should first of all take care and worship our grandparents. They are living gods of our society. So here is a story. The story's name is A Wise Grandmother. As you know, there are so many riddles which are hard for us to solve. I am going to tell some riddles before you. Interesting riddles. Listen it carefully. I am also answered that in this class. So look at this carefully and know how they trickfully questioned for a simple answer. So here is a first riddle for you.
I am 1 cm. I am 1 cm twice in the coffee, but not in sugar, but not in sugar. Who am I? Question is, who am I? So the answer is letter E, because in the word tea there is a single letter of E. In coffee we use twice that letter, but in the word sugar there is no E in this word. So the answer is E. It is quite different and quite interesting. The answer is so small, but these riddles is so interesting to listen, and also when we try to answer it, we have to think it deeply. There is another riddle for you. I have a crown, but I am not a king. But I am not a king. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. But I am not a watchman. But not a watchman. Then tell me, who am I? Who am I? Here is also a very interesting riddle. The answer is cock. Cock have a crown on their head, but he is not a king. He also gets up very early in the morning and make us to wake up from our bed. So it is not a king and not also a watchman. So the answer is cock. Here is another riddle. How can you make a rope of ashes? It is a very difficult task to do, because we cannot imagine to make a rope of ashes, because ashes is not a hard thing in which we could make our rope. So, in this story, which is I am going to teach you, how can we all are able to make a rope of ashes. There is a trick
which is answered by a wise grandmother to save from a drought to his village. So look at the topic. The topic's name is a wise grandmother. A wise grandmother. So look at your storybook. The first AGP. In the good old days in Japan, सेतबेले बहुत पुरातन समय, सेतबेले लोकमानकर चलनी बहुत भल रही समाज मध्य। ठीक से समय कथा, दे लिव्ड ए यंग फार्मर। सेठारे गोटे युवक कृषकटे बसवास करुला विथ हिज ओल्ड ग्रांडमदर। ताले युवकटे तार बुढ़ी माँ सहित बसवास करुला। तारो द यंग फार्मर, से जो युवक फार्मरटीर ना रही तारो, लव्ड हिज ग्रांडमदर वेरी मच। तार से जो जेजेमा को बा आई माँ को बहुत भल पाउथिला। लाइक द अदर फार्मर्स इन द विलेज, अन्य कृषक मानक परी से गाँव तार ठू ग्रीव हिज ओन राइस। तार मध्य से तार निजस्व खेतरे शस्य उत्पादन करुथिला। व्हीट गहम एंड वेजिटेबल्स एवं पनीपरिबा इत्यादि फसल करुथिला। एंड लिव्ड इन पीस एंड हैप्पीनेस, बहुत शांति एवं खुशी रे से बसवास करुथिला। बट थिंग्स डू नॉट गो द सेम वे ऑलवेज। प्रकृत में समयटा सबुबले समान न थाए। आम जमी जाचे दिनटा को मध्य भी समय हिसाब रे तार परिस्थिति हिसाब रे बहुत विभाग करा जाय था। जेमती डॉन टाइम, मॉर्निंग, तापरे नून, डे, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। ठीक से भलिका आमर जो नित्य दिनर जीवन मध्य समयटा मध्य भी सबुदिन सुख आसेनि कि सबुदिन दुख आसेनि। दुख पर परे सुख आसे एवं सुख पर परे दुख मध्य भी आसे। तेणु समय क्रमे सबु समयटा सुख प्रदान करबा एक कथा भाबिबा भी भूल। तेणु सबुबेले पैका से सुखर रही पारि नथिला। वन्स देयर वाज ए नो रेनफॉल, तेणु वर्षा हेलानी। एकदा थरे से जापान रे वर्षा बंद हो गला। ए ड्राउट केम। ड्राउट मीन्स दुर्भिक्ष। ताले न्यू वर्ड्स किछि हमें जानिबा एतिरो। ताले ड्राउट कहले दुर्भिक्ष आसी पहुंचतिला से जापान रे ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड ड्राइड द फील्ड्स एंड वेल्स। ड्रायर अतीत काल ड्राई है सुखा। ड्राइड अर्थ सुखे देथिला। तेणु सुखे देथिला कौन समस्त ओएल कहले कूप गुड़िक एवं फील्ड्स कहले खेत गुड़िक। स्लोली फूड बिकेम स्केर्स। फूड कहले खाद्य पदार्थ बहुत अभाव परिलक्षित है। स्केर्स कहले अप्रचुर। दुर्लभ जाऊ खाद्य पदार्थ दुर्लभ हो उठला। द पीपुल
feared that लोक माने भयभीत होइले within a few days किछि दिन मध्यरे there would be no food at all कौन सी प्रकार खाद्य पदार्थ आउ मिलिबा नाही। द हेडमैन ऑफ द विलेज से जो ग्रामर मुखिया लोकटी जी रही वाज भेरी मच ओरिड सी मध्य भी व्यतिव्यस्त हो पड़ा ओरिड व्यस्त हो पड़ा। वी मस्ट थिंक ऑफ सम वेज आमको निश्चिंत भाव किछि उपाय वेज कहले रास्ता हिसाब से व्यवहार करती किंतु एठारे वेज अर्थ किछि उपाय उपाय पांचिया पड़ो बा उपाय कथा किछि विचार करिया पड़ो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्व कहले समाधान करवा सॉल्व कहले समाधान करिया यही जो हार्ड टाइमटा रही ये हार्ड टाइमटा को ओवरकम करने बा टैकल करने किसी उपाय आमको पांचा पड़ो। ही टोल्ड इन ए मीटिंग गोटे सभाटी डकईकरी से सभा मध्य एक कथा आलोचना करथिला ऑफ द विलेजर्स गाँ लोक मानकर ईच वन मस्ट हैव सम फूड प्रत्येक लोकों पाखे किछि किछि खाद्य निश्चित थिबो सेड वन फार्मर गोटे कृषक जने कहला बट नथिंग कैन बी ग्रो विदाउट वाटर किंतु किछि भी जल व्यतीत बट नथिंग कैन बी ग्रोन विदाउट वाटर जल व्यतीत कौन सी प्रकार जिनिस बढ़ेबा बा वृद्धि करने संभवपर नुहे। आई नो नाउ द ओनली सॉल्यूशन केवल यार गोटे समाधान रही सॉल्यूशन मीन्स मध्य भी समाधान यार गोटे मात्र सॉल्यूशन रही इज टू मूव अवे फ्रॉम आवर विलेज आम गाँव आम मैंने कौन करवा ना जो जल उपलब्ध थी से स्थान को जावा जो खाद्य उपलब्ध थी से स्थान को चली जा टू द नियर बाय माउंटेन साइड तेणु पाख ग्रामर पाखरे रही माउंटेन साइड पहाड़र कड़ू को चली जावाई से कहते लेट द यंग पीपुल स्टे हियर एठारे ओल्ड पीपुल को माउंटेन साइड को लेकिरी एठारे युवक लोक माने रहिबे आज दे आर स्ट्रांग कारण कौन थिला से मान बहुत शक्तिशाली रही थे एंड कैन वर्क हार्ड टू इम्प्रूव द सिचुएशन इम्प्रूव कले वर्धित करने बढ़ाइया ये जो सिचुएशनटा ये जो परिस्थितिटा पड़ी ये परिस्थितिटा को ओवरकम करने दूरे देवाई से माने हार्ड लेबर करें कठिन परिश्रम करें। आफ्टर ए मोमेंट साइलेंस गोटे मुहूर्त बा किछि मुहूर्तर नीरवता परे द हेडमैन कंटिन्यू से मुखिया लोकटी पुनर्बार क्रमागत करथिले कथाटा को जारी रखिथिले। ऑल द ओल्ड पीपुल एबव 60 जो मानकर बयस 60 वर्ष ऊर्ध शुड लिव शुड कहले उचित अर्थ आम व्यवहार करें शुड लिव कहले त्याग करवा उचित त्याग करवा उचित एंड गो टू द माउंटेन विलेज से जो पहाड़ पाखे रही गाँ को चली जा दरकार होयर इट वुड बी इजियर टू गेट फूड जो कि इजियर कहले तुलनात्मक शब्द ईआर फॉर्म इजी रु इजियर दुई जनक मध्य तुलना करवा माउंटेन साइड एवं विलेज साइड कथा करा तेणुक इजियर कहले सहजतर हवा टू गेट फूड खाद्य पाइबा ऑल द फैमिली सेट प्रत्येक परिवार लोक
कही ए सैड फेयरवेल फेयरवेल कहले विदाई की विदाय देवा तेणु सेमानकर टू देयर डियर डियर कहले अत्यंत प्रियर ओल्ड वन्स वृद्ध लोक मानक हु आर एबव 60 years old वन्स हु लेफ्ट फॉर द माउंटेन विलेज जो माने से जो पहाड़ पाखर ग्राम को जाउथिले बट तारो कुड नॉट बियर द पार्टिंग पार्टिंग कहले विच्छेद बियर कहले सह्य करिबा ताले सीए ता ओल्ड ग्रांड मदर ठारू विच्छेद हबाकू सह्य करि पार नथिला बिकॉज ऑफ हिज डीप अटैचमेंट डीप कहले गभीर अटैचमेंट संलग्न अटैचमेंट हवा आसक्त ता ग्रांड मदर सहित जो रही आसक्ति गभीर आसक्ति से सहीटा को छाड़ी पार नथिला सो ही क्वाइटली चुपचाप क्वाइटली कहले चुपचाप क्वाइटली कौन करथिला टूक हर तार ग्रांड मदर को नहीं थिला टू एन अंडरग्राउंड भूगर्भस्थ घर अंडरग्राउंड घर भूमध्यस्थ घर को रूम एट द बैक ऑफ द कोर्टयार्ड तार अगणार पछपटे गोटे अंडरग्राउंड घर रही कोर्टयार्ड अगणा ताले अगणार पछपटे गोटे रही अंडरग्राउंड घर ता मध्य से नहीं जाइथिला ही सप्लाई करिबा पहुँचेबा बा जोगाण करिबा जोगाई देबा हर फूड एंड लुक्ड आफ्टर ऑल हर नीड्स देयर एवं जहाँ जहाँ तार बुढ़ी मार आवश्यकता पड़ुथिला नीड्स कहले आवश्यकता जहाँ जहाँ पड़ुथिला से गुडी को नहीं किसी ताको जोगई दउथिला तेणु यही थिला SGP1 एवं से विषयर किछि ओडिया रे अनुवाद तापर देखिबा एई SGP1 संक्रांति रही किछि क्वेश्चन एवं तार आंसर्स गुड़िक बर्तमान देखिबा किछि एई SGP1 रही प्रश्न एवं तार उत्तर गुड़िक प्रथम क्वेश्चन रही हु वाज तारो तारो किए थिला तारो वाज ए यंग फार्मर ऑफ जापान हु लिव्ड विथ हिम किए ता सहित बसवास करथिला हिज ग्रांडमदर lived with him एवं सेकेंड नंबर क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड तारो लिव ताले तारो लिव्ड ए पीसफुल एंड ए हैप्पी लाइफ तृतीय नंबर क्वेश्चन व्हाट ट्रबल्स केम टू द विलेज ताले वन्स देयर वाज नो रेनफॉल
So drought came and dried up all the wells and fields. Slowly food became scarce. It was the problem. It was the problem. तापर देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन. Who were forced to leave the village? Who are above 60 years old they were forced to leave the village, Why? कारण कौन? Because they were not as strong as the young people so they could not work hard, improve the situation. पांच नंबर क्वेश्चन. Who stayed back in the village? The young people stayed back in the village. पुन क्वेश्चन है why? Because they can work hard and improve the situation. तापर रही 6 नंबर क्वेश्चन. Was the village headman's decision right? What do you think? No. The village headman's decision was not right. तापर देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन एवं तार आंसर. 7 नंबर क्वेश्चन रे रही छे हाउ डिड द यंग पीपल फील व्हेन दे सेड गुड बाय टू देयर ओल्ड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. द यंग पीपल फेल्ट सैड. द young people felt sad when they said goodbye to their old parents and grandparents. 8 number question. How would you feel if you were the young villagers? I would also feel bad and
sad, young villagers, 9 number question, why did Taro not send his grandma with other old people? कहीं तारो छाड़ नथिला तारो had a deep attachment with his grandmother, so एबे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन एवं तार आंसर व्हाई डिड तारो नॉट सेंड हिज ग्रैंडमा with other old peoples? Taro had a deep attachment with his grandmother, so Taro did not send his grandmother with other old peoples. तापरे शेष क्वेश्चन what did he do with her? से ता ग्रैंडमा सहित कौन करथिला ना तारो quietly to an underground room at the back of the courtyard. He supplied food and other needs and looked after there. ताले एतिकी रहितला से जो SGP1 रो क्वेश्चन एवं तार आंसर गुड़िक पुणी थे देखा आउ गोटे कालांश SGP2 को लेकर से पर्यंत रहूछु। धन्यवाद।